हाय गाइस, माय नेम इज़ वैभव एंड वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। आज मैं आप लोगों को एक शो रेकमेंड करना चाहता हूँ। इट्स अ अमेजिंग फील गुड शो जो अभी मैंने रिसेंटली देखा था, एंड आई थिंक इट्स प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग यू कैन वॉच इन द कोविड टाइम्स टू फील बेटर, बिकॉज दीज आर रियली रियली ग्रिम टाइम्स एंड मतलब कुछ ना कुछ हमें चाहिए जिससे एटलीस्ट हम किसी ना किसी लाइफ के एक पार्ट में हम थोड़ी सी खुशी महसूस करें. सो दिस इज अ शो विच इज टेलर मेड फॉर द टाइम्स when you're feeling sad and when you want to uplift your mood. So the show that I'm talking about is a show which is called Ted Lasso and it's available on Apple TV. बहुत ही शानदार शो है ये. इट्स द स्टोरी ऑफ दिस US बेस्ड फुटबॉल कोच जिन्हें एक यूके की एक फुटबॉल क्लब को मैनेज करने के लिए बुलाया जाता है. एंड ही इज़ नॉट लाइक वेरी फेमस, किसी बहुत बड़े क्लब के यूएस में कोच नहीं थे. एंड द रीजंस वाई इज़ ऑल्सो called to take care of this UK based club. Those reasons are also not great, but when he comes there you realize, hey, this new coach, he like everyone hates him because he's like, they are like कि ये US का coach हमें कैसे जिताएगा, but this guy has a way about going things that is so likable, and you just can't help but like this guy. And this whole show is about like watching the life of Ted Lasso up close and personal. The name of the coach is Ted Lasso, and Ted Lasso is hired by Rebecca is the owner of this club. So Ted Lasso does things for people which normal people don't. Ted Lasso will make biscuits for you. Ted Lasso will like take you out for dinner. Ted Lasso is going to take you to these Indian restaurants in UK, and like he's going to have like the best meals with you. तो उनके लिए ह्यूमन एलिमेंट बहुत ज़रूरी होता है इन लीडरशिप. एंड some might say it's right, some might say it's wrong, but when you watch this show, it just makes you feel so good. So this club that he is a part of, जिसका नाम होता है रिचमंड, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा क्लब नहीं है और इसके प्लेयर्स का एक अलग डायनामिक है. सो रॉय केंट इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम, बट ही हैजंट एज्ड like in the nicest way, and Jamie Tart is the most valuable MVP of the team, and he knows his worth. He's almost arrogant, not almost, he's very arrogant. He knows people come to see him. तो जब मैचेस भी होते हैं तो वो जाके मी करता है लाइक मैंने गोल किया, एंड जब उससे इंटरव्यूज़ लेते हैं तो बोलता है कि ऑल द प्लेयर्स सक, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी दैट द क्लब इज़ डूइंग सो गुड. सो व्हेन टेड लासो कम्स, ये काफ़ी चक दे इंडिया वाला वो है जहाँ पे वो चक दे इंडिया में भी शाहरुख मेक्स देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नीयत, कि भाई नीयत अच्छी होनी चाहिए, गेम तो बाद में अच्छा होता है. एंड समथिंग लाइक दिस हैपन्स इन दिस क्लब ऑल्सो, वेयर ही इज ट्राइंग टू like make do with the people that he has, but like first wins them over by showing कि पहले आप दोनों लोगों की जो खुद की डायनामिक है वो इम्प्रूव करना पड़ेगी. लाइक ही डज दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि स्टार्टिंग में बोलता है कि मैं एक डब्बा लाया हूँ, इसमें फीडबैक डालो सारे. एंड ही इज़ लाइक कि लोग बोलते हैं क्या ये मतलब ऐसे 100 साल पुराना तरीका लाया फीडबैक लाने का. एंड ही डज दैट लाइक, एंड सम पीपल टेल हिम. एक बंदा उसको लिख के भेजता है कि जब मैं शार लेता हूँ, आई थिंक इट्स बाय रॉय केंट, तो जो होज़ है लाइक द शार का जो होज़ है उसमें पानी प्रेशर के साथ नहीं आता है. एंड ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं. फिर दिखाएं कि द गाय हु हैड कंप्लेंट अबाउट इट, वो अगले दिन वापस बहुत थका हारा ना जाता है लाइक टू हैव द शार, एंड लाइक ही टर्न्स ऑन द शार एंड इट्स लाइक वो गिर ही जाता है, लाइक फोर्स की वजह से गिर जाता है, बिकॉज लाइक ही फिक्स द शार. सो टेड लासो टेंड्स टू डू दोज थिंग्स. वो छोटी छोटी चीज़ें ढूंढता है और उनको फिक्स करता है. आई रेड दिस बुक सम टाइम बैक, द स्कोर दैट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. इट्स ऑल्सो द स्टोरी ऑफ दिस फुटबॉल मैनेजर जिसने बताया कि आपको कैसी कैसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. सो इट्स काइंड ऑफ डिबेटेबल लाइक कि इज टेड लासो इन एक्चुअलिटी अ गुड कोच. लाइक जैसे आप दी ऑफिस देखते थे, तो दी ऑफिस में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइक क्वेश्चन आ सकता है कि वॉज माइकल स्कॉट अ गुड सेल्समैन. बट लाइक कभी कभी मैं कुछ सीन्स रिविजिट करता हूँ क्योंकि दी ऑफिस मेरी एल्गोरिदम में आता रहता है. सो आई जस्ट रियलाइज दिस वन थिंग, Michael Scott was not a bad salesman. I'm not saying he's a good salesman, but he was definitely not a bad salesman, because there is a scene जब वो एक बार जैन के साथ एक मीटिंग क्लोज करने जाते हैं, and he's acting, he's saying stupid things, और जैन फिर कुछ बोलने की कोशिश करती है, so he shushes, like he's like shh, don't say anything, उसको बिल्कुल इशारा कर देता है. and then people, मैंने comments में पढ़ा था, they're like, माइकल ने जो भी चीज़ enact की है, it was all the part of the game. It was all a part of the plan. So हमने जो इतने seasons तक माइकल देखा था, maybe he wasn't that stupid. So same applies for Ted Lasso. Ted Lasso is like माइकल के कुछ elements थोड़े annoying होते थे. There is nothing annoying about Ted Lasso.
टेड लासो जस्ट मीन्स गुड टू एवरीवन. कोई गलती भी करता है, लाइक देयर इज़ अ पार्ट जहाँ पे उनकी किसी से लड़ाई हो जाती है एंड ही फॉरगिव्स दैट लेडी. एंड लाइक वो लेडी अपनी एक फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रही होती है कि क्या हुआ व्हेन यू टोल्ड हिम दैट, एंड ही इज़ लाइक द फकर जस्ट फॉरगिव मी एंड शी इज़ फीलिंग सो बैड. उसने तो मेरे को फॉरगिव ही कर दिया यार. एंड ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. माई फेवरेट पार्ट्स कम टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द शो, वेयर देर इज़ दिस पार्ट जहाँ पे ये क्लब बनाते हैं, डायमंड डॉग्स करके एक क्लब बनाते हैं, एंड दैट्स ऑल्सो द नेम ऑफ द एपिसोड. मैं शायद नाम गलत बोल रहा हूँ, वर्ड शायद स्वॉप होंगे, बट वेयर दे मेक अ कमिटी वेयर दे विल डील विद वेमेन प्रॉब्लम्स. तो रॉय केंट को एक बार कुछ इशू हो रहे होते हैं, सो रॉय केंट उनके पास आते हैं एंड लाइक दीज डॉग्स, डायमंड डॉग्स सिट टुगेदर, लाइक द कोच, द मैनेजर एंड वन ऑफ द असिस्टेंट्स टू रेबेका, और वो बताते हैं हाउ टू डील विद दिस थिंग. And they like do that in a very mature way, yet they have named their club Diamond Dogs, and when they come up with a solution they also howl out. बहुत ज़्यादा फनी था वो. एंड आई थिंक उस एपिसोड के बाद comes my all-time favorite like part of the show, where there is a dart game between the ex-owner of the club, who also happens to be the ex-husband of Rebecca, the current owner of the club. So there's a dart game between him and like Ted Lasso. I started crying when I watched it for the first time. उसके बाद like I asked like numerous people to watch it. Like I sent it to my brother, who by the way recommended this show to me. I was talking to Vani, I made her watch this like scene कि ये scene देखो सारे, because it's so good. अगर आप टेड लासो डार्ट सीन भी जाके गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, you will get the context. बट फॉर इट टू प्रॉपरली लैंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप जाके पूरा का पूरा शो देखें. अभी इस शो का एक ही सीज़न आया. इंटरेस्टिंगली आई वॉच्ड इट एट द राइट मोमेंट, क्योंकि इसका जब सीज़न 2 आएगा, इट्स कमिंग वेरी वेरी सून. सीज़न 2 इज़ कमिंग इन आई थिंक जुलाई. देयर इज़ दिस अदर शो दैट मेरे को जो बहुत पसंद था. इट्स लाइक एन एंटी द कोविड टाइम्स रिकमेंडेशन. इट्स द लेफ्ट ओवर्स. मतलब वो रेड बटन है, लेफ्ट ओवर्स गलती से भी मत देखना कोविड टाइम्स में, बिकॉज it's very depressing. It's also a great show. It's one of the finest shows I've seen, but it will make you feel like shit. और since अभी तो हमारा ह्यूमन इंट्रैक्शन वैसे ही बहुत कम हो रखा है, तो लेफ्ट ओवर्स मत देखना. बट अगर मैं उसी टैंजेंट पे जाऊँ तो बिल्कुल 180 डिग्री दूर है टेड लासो, विच इज़ मेड फॉर द टाइम्स व्हेन यू फील सैड. I felt so good after watching this show, and I am very very happy that I watched it. We need these things right now, because it's very difficult to be in a good mental state all the time. So shows like these help. So I would highly recommend that you can go and watch Ted Lasso. Beautiful, beautiful stuff. It's available on Apple TV. Do let me know what you think of it. And this was my recommendation for the week. If you like our work, do subscribe to our channel. We recently crossed 50,000 subscribers. हमारी merchandise launch हुई है guys. I don't know if you know about it, but our merch is out. And it's out on kadakmerch.com. kadakmerch.com पे जाइए. YouTube community में भी जो store होता है वहाँ पे भी available है. It's available on both these places, and you can buy our merchandise there. If you do buy it, हमें एक snapshot भेजना आपकी टी-शर्ट में. Instagram पे हमें DM करना Chalchitra Talks पे, and we will post your photo there. And you can also contribute to us on Patreon and YouTube community. We have more than 85 patrons now, and these people get perks, like exclusive perks like Chalchitra Music Club, Book Club and Movie Club का access on WhatsApp. These are some of the groups we have made for our gladiators and godfathers. जो exact perks के जो भी advantages हैं वो आप पढ़ सकते हैं in the description below. And that is it. Do like our work, do subscribe to it, and stay safe, stay at home. एंड घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए अगर पॉसिबल है तो. घर पे भी अगर आप लोग रह रहे हैं, देन आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज टू लाइक वॉश योर हैंड्स एंड सैनिटाइज देम रेगुलरली. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Like do talk to your friends if you can, call them, like call your parents, and just make sure everyone around you in your inner circle, they are doing okay, because we all need to be together in this. So yeah guys, stay safe. I'll see you soon.